currently Jyoti Prakash Kadia sir. He's from Rajasthan and one of the most influential people, and he's from the financial sector of India. So you've been contributing a lot since 20 years now. Yeah. So I would really like to, our people to know that your journey, how you started, and what's like how so far is the journey. So I just wanted to tell people that we run one of the India's biggest financial advisory firm called Resurgent India Limited. We have around 300 people working together with pan-India presence. Majorly, we are into 5 different services. First of all, we help companies in raising money. पैसा कैसे भी रेज हो सकता है, डोमेस्टिकली रेज हो सकता है, इंटरनेशनली रेज हो सकता है, लोन के रूप में हो सकता है, बॉन्ड के रूप में हो सकता है. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं, बहुत सारे लोग आपको पैसा देने वाले हो गए. अब एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ये नहीं पता लगता कि किसको अप्रोच करें, कौन आपके लिए राइट पार्टनर है, कौन से किस टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको पैसा लेना चाहिए. आप यदि कोई जैसे इंटरेस्ट रेट में ले रहे हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी ले रहे हैं, तो एक आपको ये पता कैसे लगेगा कि आप इंडिया के अंदर में जो भी आप काम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो आपको राइट टर्म्स में दे रहा है कि नहीं दे रहा है जी. और आप राइट आदमी किससे आप किसको अप्रोच करें पैसा लेने के लिए. वो पूरा काम हम एंड टू एंड करके देते हैं. बिजनेसमैन को बोलते हैं कि सर हम आपके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना, आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है वो भी हम असेसमेंट करके बताते हैं. उसके बाद फिर हम आपको बैंकों तक लेके जाते हैं, फिर इंस्टीट्यूशंस को लेके जाते हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद हम एंड टू एंड काम करते हैं. हम आपका साथ तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ जाते. तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बाकी के कंसल्टेंट की तरह या लोगों की तरह जो खाली ज्ञान देके चले जाते हैं. हम ये बोल रहे हैं कि हम एक्चुअल में एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं, जहां पे हम आपके साथ में मिलके और आपके प्रोजेक्ट या आपके जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए जो पैसे का जो काम है वो हम आपके साथ मिलके करना चाहते हैं और वो करता हूँ. Okay, thank you so much for joining. Thank you so much. Thank you for all the support. Everybody, today we have Gaurav Gaur, which is the founder of Elite Miss Rajasthan, which is one of the state level and also India's #1 leading beauty pageant show hosting from Rajasthan. And first of all, sir, I would really like to know like your journey so far, how you started. Elite Miss Rajasthan journey is 13 years. 13 years back we started, and we've done 12 seasons till now. And we are so proud that people have recognized our beauty pageant Elite Miss Rajasthan, and now it is India's #1 state level beauty pageant. So we are so proud of Elite Miss Rajasthan. Sure. So like as of I would like to ask, like pageant industry not just helps in the modeling but also in the women empowerment section. Absolutely. They help NGOs across the India. So how do you think that your company has been inspiring and Absolutely. We've done, the girls who have participated in Elite Miss Rajasthan have won Miss Indias also. So they have we are contributing to women empowerment also. Plus we are associated with all the NGOs also. So they are doing a lot of things for women empowerment and NGOs, as you said. Sure. And the women from Elite Miss Rajasthan, they must represent them, at international levels. They have done. Yes, and then they representing the small and the minute problems from India, picking up from the small villages. Yes. And what they have surely represented. And thank you so much, sir. Thank you. And thank you, ma'am. So currently we are having Salma Sayyed, ma'am. She is one of the most India's leading cosmetologist, a trainer, and also an author of many books. So I'd really like to know, ma'am, you have also won an award. So I'd really like to know how's your journey so far, how you started, and what inspired you to be a cosmetologist and an author now. मुझे अगर एक तजुर्बा अगर मिला कि मेरे लाइफ के अंदर काफी कुछ उतार चढ़ाव थे कि उसके अंदर से कैसे निकलना है. एक वक्त था कि कम एज के अंदर शादी होने के बाद अगर मैंने सोचा था कि कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से करना है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था. लेकिन धीरे धीरे जैसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट के अंदर मैंने ब्यूटी फील्ड के अंदर वहां से पढ़ाई की, तो जब कोई रास्ता नहीं नजर आता है और उसके बाद एक छोटा सा, एक कहते हैं ना, ज्योति कह सकते हो, किरण कह सकते हो, और वहां अगर हम लोगों ने एक उम्मीद की किरण कह सकते हो, होप आपने जैसे सही कहा, उसके हिसाब से हम लोग अगर सोचा जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं. मैंने लाइफ के अंदर काफी कुछ अचीव करने के रास्ते में और एक जर्नी में हूँ. मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा जर्नी में चलना मुझे ज्यादा पसंद है. तो उसके हिसाब से मैंने लाइफ के अंदर जो कुछ अचीव किया, आज काफी लोग मुझे इंस्पिरेशन मानते. चिराग पासवान जी से भी मैंने काफी कुछ सीखा, जयप्रदा जी से भी, इनसे भी देखा कि घर के अंदर इतने एक्सक्यूज होके उन्होंने इतना उनके घर में अगर पर्सनल प्रॉब्लम होने के बाद भी उन्होंने यहाँ के
सब कुछ मोटिवेट किया, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है, एक सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पहले तो ये मैंने फील्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट खुद के लिए मैंने शुरू की थी। अलग अलग कोर्सेज करती गई, एक भूख बढ़ती गई कि इसके अंदर से और कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि हर कोई लेडीज हमारी जैसे इंडिया के अंदर हर कोई इतना पे नहीं कर सकते कि 15 लाख 20 लाख रुपया पे नहीं। तो मैं वहां से अलग अलग एजुकेशन लेकर यहाँ वर्कशॉप के थ्रू, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, किताबों के थ्रू, हर एक जो रूरल एरिया से लेके काफी चीज, और काफी यूथ है जैसे टैटू इंडस्ट्री से लेके काफी, उन लोगों को अगर मैं बताऊं इसके अंदर, तो मैं कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक पार्ट निभा सकती हूँ। अगर मैं निभा रही हूँ और मैं अगर 1000 स्टूडेंट को, तो वो लोग भी वो पार्ट निभा रहे, इस तरीके से कहीं ना कहीं छोटा सा कंट्रीब्यूशन मैं अपने तरफ से करने की कोशिश कर रही And that's a wonderful and Thank beautiful you so contribution, much. ma'am. And as you said that, you got married at an early age. So I think there are many struggles. And as a woman, I feel like there are many struggles that, that generally can't be expressed. एक अगर हम लोगों ने सोचा जाए, तो मैंने लाइफ के अंदर एक समझ में आ गया कि 2 टाइप की पर्सनैलिटी होती है। एक होते है कि मतलब पॉजिटिव माइंड, और एक होता है नेगेटिव माइंड। जी। तो मतलब अगर देखा जाए तो हम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट गिरता है संगत का। जी। अगर हम लोगों ने मुश्किल के अंदर से अगर पॉजिटिव माइंड होगा ना, तो हर प्रॉब्लम में सोल्यूशन नजर आएगा, बस करना है। और अगर नेगेटिव माइंडसेट अगर हम लोगों ने रखा, तो बस हर सॉल्यूशन में हमको प्रॉब्लम नजर आएगा। तो मैंने हर लेडीज को, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं और जितने मेरे लाइफ में मेंटोर आए, उनसे इतना ही सीखा है कि रास्ता एक कदम तो बढ़ाओ, फिर आगे मंजिल खुद ब खुद शुरू हो जाए। जी जरूर। Thank you so much for joining me, Thank ma'am. you so Thank much, you so dear. much. Nice You won the award. This is Akansha Bhalla, one of the most influential and the most pretty lady that I've seen so far. So she is the Miss Youth icon of from Rajasthan. Again, representing. She's an actress and model. And I would really like to know, ma'am, how's the journey so far? It has been really special. I'm into this industry since last 10 years with modeling and acting both. So I believe that my journey was beautiful, and I have experienced a lot. Training new girls, giving them the inspiration, and they get to learn anything from me. So I feel absolutely proud that I am a part of this industry, and whatever I contribute is really, really special to me. Sure. And other than that, I would really like to know how you started. What inspired you to be a model and an actress? Because nowadays, like being in modeling, it's not just about like walking the ramp show. It's about holding a personality. Women I've seen at international levels, even at the national levels, they hold a meaning. They hold a subtle, vision behind. Like they want to represent something. So, what was your vision, ma'am? I'd really like to know. Well, I believe since childhood, I wanted to become model only because. In my childhood days, I used to when people used to watch cartoon kids, so that time I used to watch fashion TV, Ramp Walk. So I believe from that I took it in me, and then yes, and later I pursued it as my career, and I am really, really happy. I am very much satisfied. I believe that this was the only thing which was meant for me. I am a BCA and MCA qualified person, but still modeling was something which attracted me the most. Yeah. Huh? Even I started my journey from Elite Miss Rajasthan, the best beauty pageant of Rajasthan, and now I'm here. I train those girls also, and it's been 10 years since I'm a part of Elite Miss Rajasthan. So every year I train those girls from the small towns of Rajasthan all over. So I feel absolutely delighted. I would really like to say that you're truly inspiring. The way you speak, the way you I try to. You're like, it's working, ma'am. It's absolutely working. Thank You're you so doing the much. wonderful job. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I'd really like to know your journey so far and how you started. And I truly believe food industry is one of the most competitive industries, Right. And it needs creative people in business. So you have to be creative. You have Of to course. bear the challenges that have come up. Correct. So how have you crossed this journey so far? I'd really like to know. Yeah, so basically the restaurant business is such that has been emerging since a long time. Yes. We've been doing it since 15 years now. Okay. So we are one of the pioneers in the industry when it comes to cloud kitchen. The cloud kitchen is one of the business where you get the food delivered via online aggregator. Yes. So we have multiple kitchens at multiple locations, many cities. Okay. It's been a big journey, long journey so far. Okay. So we've been trying to do good work, and I think that is why we are here, Okay. because of the
good work we have done. Yeah. Yes, for sure. And I would really like to know, sir, like I feel like Indian industry, the food industry, it has a lot of taste palettes. Correct. So how you started and how you like managed to adapt all the taste palettes across India? Yeah, so basically every 200 kilometer taste change in India. Exactly. That's the geographical condition of India. I mean, So- within Delhi itself, like, you know, East Yeah. Delhi, it has different. Different, West Delhi, and it is West is different. Yeah. So we've been shortlisted few people in our chef team who are capable of making taste different at a different location. Okay. Also, we are on a system that just like McDonald's, when it comes, they sell aloo tikki burger. Outside, Yes. they sell all non-vegetarian. Yes, So yes, that yes. is how because we are in South India also. Okay. So few brands in the South Indian, when it goes to a South Indian geographical conditions, they sell biryanis and all. Okay. The same brand sells butter chicken here, or paneer tikkas and all. So this is how we've been differentiating in the geographical conditions of India. Okay. Thank you so much. Yeah. For